પાંચ રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુની ચૂંટણીની જાહેરાત, આસામ, પુડુચેરી અને કેરળની ચૂંટણીની જાહેરાત. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ચાલુ. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું કે તમે જાણો છો કે આ પાંચેય રાજ્યો ભારતની સાંસ્કૃતિક અને લોકશાહી સમૃદ્ધિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ રાજ્યોમાં એસઆર બંધારણ અનુસાર હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. કોઈપણ લાયક મતદારને બાકાત રાખવામાં આવ્યો ન હતો. આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેનારા તમામ બીએલઓને મારી શુભકામનાઓ છે. The session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40, 94, 25. Hello. 3. जी, मेरा सवाल है एबीपी न्यूज से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू सर। दिस साइड हर्षा फ्रॉम रिपब्लिक टीवी. Sir, my first question, sir, earlier this week you had sought the list of police officials during whose presence the post-poll violence took place in the year 2021 in West Bengal. So what's the status of it? And sir, whether those police officials will be deployed in the polling state in West Bengal during election or not? So second one, so when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list? नीरज सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल यह है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर, मैं अश्विन कुमार सिंह एनडीटीवी से। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपए का मानदेय बढ़ाया पुजारियों और मुआंजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? Sir. First of all, I'd like to make clear that the model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the model code of conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down
to an extent where it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the orders of the Honorable Supreme Court, the learned judges working under the directions of the Honorable High Court of Calcutta would be bringing out this supplementary list. And as and when the supplementary list, the names are coming out, they shall be included in addition to the existing electors. With regards to some other questions, I would like to make it clear that elections in all these 4 states and the Union Territory of Puducherry shall be violence-free and inducement-free. Commission will take strict action if anything to the contrary is noticed or reported. 39, either 42, हाय सर 56, पीछे दीजिए 56, सर मनोहर केसरी न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से सर सर लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे एसआईआर को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी रही और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए गए जहां टीएमसी के ज्यादा वोटर्स थे। तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, क्या कहेंगे? Sir, Venkataraman from Dinamala from Tamil Nadu. So now the trend has come that before the election date announcement, the government's offering money. The Bihar before assembly election 10,000 rupees was offered to the voters. Followed by Tamil Nadu has announced 5,000 rupees. Does the election commission has any plan to prevent this kind of activities? Number one. Due to freebies, most of the state government become a bankruptcy. Whether the election commission got to know the facts that what kind of action is going to be taken by the Election Commission of India. 3, during TN session time. Sir, please restrict yourself to one question. Please, sir. Only the No, last we'll go on question. to the next During the question, sir. TN session time, the Election Commission was considered to be one of the best commission. Now, when are we going to see the same kind of opinion from the public? Either 42, 42. सर